Assalamu alaikum student, we are going to start another new topic which is endothelium. So because before study thrombosis which is a new topic for you, we should learn enough about endothelium and function of platelets. So our new topic is endothelium. So the question is, what is endothelium? Endothelium actually a single layer of cell which forms the internal environment, internal structure of the blood vessels, lymphatic vessels, and heart chamber. You can see in diagram how endothelium is a single layer of cell which is the innermost layer of blood vessel as well. It is also present in arteries, veins, capillaries. So all type of blood vessels have endothelium, or endothelium is actually composed of endothelial cell. A single unit is known as endothelial cell. So endothelium is essential part of all blood vessels. So endothelium estimated value of endothelium के हमारी बॉडी में एंडोथेलियम कितनी है. सो एंडोथेलियम फॉर्म एन अडल्ट बॉडी इज इक्वल टू 8 टेनिस कोर्ट्स. ठीक है. इज इट इज़ एन अप्रोक्सीमेट कंडीशन के जब कभी भी एंडोथीलियम को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाए अडल्ट बॉडी से, देन वी कैन एस्टिमेट कि 8 टेनिस कोर्ट्स को वो कवर कर सकती है. सो यू कैन इमेजिन हाउ मच एंडोथीलियम is large. So around it can cover 400 to 700 square meter area, and it is around 1.5 kg of total body weight of an adult body. So endothelium, so you can guess, you can imagine the value importance of the endothelium in our blood vessels in our body. Now let's talk about the endothelial cell. A single unit of endothelium is endothelial cells. Number of endothelial cells. Many endothelial cells cell combine to form endothelium. So endothelial single endothelial cell is around 2 to 3 micrometer thick at the level of nucleus. It means at where is nucleus at where position is nucleus present, the maximum thickness of endothelial cells can be observed, which is 2 to 3 micrometer. Then in capillaries endothelial can be thin as zero point 0.2 micrometer. That's why transportation of different material, for example carbon dioxide, oxygen, many enzymes, hormones, other nutrients, is easy from capillaries because cells are much thinner. So they are in direct contact, with tissues. So from blood to tissue or tissue to blood transfer is very easy. Then we are going to talk about diameter of is around of endothelial cell is around 10 to 20 micrometer. Ultrastructure level, and a single endothelial cell contain number of vesicles, number of hidden organelles, number of characteristics organelles. It means a very important organelles are present inside the endothelial cells, which are responsible for performing number of function in number of conditions. So these hidden organelles are transcytotic vesicles, cavuli, वेबल पैलेट बॉडीज. सो एक सिंगल सेल जो है एंडोथीलियल सेल, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज जो हैं वो मौजूद होते हैं. उन ऑर्गेनेलिज को हमने क्लासीफाई किया है ट्रांसाइटोटिक वेसिकल्स, कैवुलाई एंड वेबल पैलेट बॉडीज.
What are the transthyrotic vesicles? Transthyrotic vesicles are high in number in those endothelial cells which are close relation in transportation of material across the blood vessel. Like in capillaries, like in endothelial cells of capillaries, transthyrotic vesicles may be high in number, but usually transthyrotic vesicles are present in all endothelial cells, but number can be vary because these are important for the exchange of material in arteries or in ways. Mostly exchange of material cannot occur or vary or occurs in very minimum quantity, in very minimum way. But in capillaries are usually responsible for the transportation of material. Then exchange vesicles can be high in number in endothelial cells which are present in capillaries. uh, in normal circumstances, you should know that in normal circumstances only some chemicals, fluids, hormones, only some chemicals, hormones, or gases can transfer across the blood vessel, but blood cannot transfer, blood cannot cross the endothelium layer. But remember one thing, blood cannot cross the endothelium layer in normal inactivated circumstances. But in case of any injury, as endothelium is damaged, then blood can cross the endothelium. But in normal circumstances, endothelium is responsible for the transportation of gases and hormones, many enzymes, but blood cannot cross the endothelium. That's why our body has closed circulatory system. Blood moves in a blood vessels in normal circumstances, and without any accident or injury, blood cannot or any pathology, blood cannot move out from the blood vessel. uh, Here endothelium and endothelial cells participates very well, shuttle small amount of extracellular fluids or blood plasma across the endothelial cell. Trancytotic vesicles are responsible for for exchange of material from extracellular fluid or blood plasma, but in from endothelial but in very small quantity, facilitate bulk exchange of dissolved gases and metabolites and nutrients. So as I told you, exchange of material between blood and tissue is necessary for the survival of tissue and ultimately for our body. So as you know, metabolism is happening in our blood as well, in our some organs. So and nutrient, and blood is rich with nutrients. So tissue requires nutrient for their survival, and they take it from the blood. So how they take it from blood? Capillaries are responsible for the exchange of gases and nutrients and essential nutrients and metabolites to provide as to provide it to the tissues. देखें, ब्लड कैपिलरीज में से जब भी कभी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी हम जो उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, हम उसे कहते हैं ग्लूकोज, हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स, जितने भी हैं, जब तक वो टिश्यू को नहीं जाएंगे, टिश्यू अपना वर्क नॉर्मल नहीं कर सकेगा, तो कैपिलरीज से ये सारी चीज़ें वहाँ ट्रांसफ़र होती हैं. हम कैपिलरी से ही क्यों करते, ये कैपिलरी से ही क्यों ट्रांसफ़र होती हैं, इन कमिंग स्लाइड्स यू कैन ऑब्जर्व इट. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन ऑफ ट्रांससाइटोटिक वेसिकल्स. ओके, फॉर एग्जांपल इन लंग्स कैपिलरीज, ये ट्रांससाइटोटिक वेसिकल्स का लंग्स कैपिलरी में बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज दे आर lungs are responsible for the exchange of gases with environment, with our blood. So they are high in number in
uh, blood vessels in endothelial cells of blood vessels, especially in lungs. Another important organelle or vesicles present in the endothelial cells, which are the cavuli. Cavuli also participate along with transcytotic vesicles. Actually, these are special type of transcytotic vesicles. So they similar functions. So these are all are related to cavuli, typical in vessels of smooth muscle cell, vascular invagination of cell surface, associated with enzymes, receptors, and ion channels. Mostly cavuli are associated with these types of functions. So then we these vesicles, why I am doing the above, why I am doing some additional things regarding these vesicles, because I believe you should know something about endothelial cells. ठीक है, तो ट्रांसाइटोटिक और कैव्यूलाई और वेबल पैलेट बॉडीज़, ये जो भी हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स के अंदर हैं और इनका फंक्शन आपके लिए ज़रूरी हैं। आपको एंडोथेलियल सेल्स की स्टडी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी है। सो इन केस ऑफ अगर कोई एमसीक्यूज आ जाता है यूएचएस में इसमें से, देन यू कैन अटेम्प्ट, आपको पता होगा कि वेसिकल्स कौन सी हैं एंडोथेलियल सेल्स में। एंड इन केस ऑफ के कोई एमसीक्यूज नहीं है, तो देन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये जो है टॉपिक वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। सो आपको जब भी कभी एंडोथीलियल, बिकॉज यू विल फेस बेसिक स्टडीज़ इन नंबर ऑफ टाइम, ये सारी फर्स्ट ईयर आपकी बेसिक है, ठीक है, तो आपको बहुत सारे वक्त पर इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। सो प्लीज़ मेमोराइज दीज वेसिकल्स, एटलीस्ट नेम्स एंड सम important functions. So another important body is present inside the endothelial cell. These are the variable pellet bodies. These are actually a storage granules, which and von Willebrand factors and P-selectins are also present in these bodies, which actually when endothelial cell gets activated in case of any injury, in case of any infection, in case of any inflammatory reaction, then these granules release, or von Willebrand or whenever von Willebrand factor gets exposed to the platelets, then platelets bind with the von Willebrand factors. So they have, these bodies have also their importance in structure of endothelial and endothelium, endothelial cells and in endothelium. So von Willebrand factor is very important for you, because in thrombosis, von Willebrand factor, role of von Willebrand factors and platelets and glycoprotein 1, 2b, 3a is very important for you. Number of MCQs are observed in the UHS from third chapter from hemodynamic. So you should memorize very important points. For example, कि वन विब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, एंड वन विब्रेंट फैक्टर बाइंड किसके साथ करता है प्लेटलेट्स की सरफेस पर, कौन से रिसेप्टर्स हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर एक बात ये भी है कि आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा टफ़ नहीं होते यूएचएस में, जितने ज़्यादा टफ़ जो होते हैं एमबीबीएस वालों के होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बीडीएस वालों के होते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इन फर्स्ट ईयर बहुत कम आते हैं, अराउंड 1 to 2 और मैक्सिमम 4 to 5। बट आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो यूएचएस है। सो आपको इन सारी बातें जो वॉन रिपरेंट फैक्टर्स, ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन दीज important points later
in later lectures, in thrombosis we will discuss clotting formation in detail, और इसके अलावा जो है in platelet, in the topic when we study platelet, then we will talk about the binding of platelet with von Willebrand factor and the receptors on the surface of platelet in detail. So here you have some important terminologies and names regarding endothelial cells. So structural heterogeneity of endothelium cells. In next slide, you can observe a diagram in which you can study diagrammatically a structure of heterogeneity. Endothelium can be continuous, endothelium can be fenestrated or discontinuous. Now I'm going toward next slide, which is the diagram of structure heterogeneity. Now you can observe in diagram A, endothelium layer is divided into very few portions, very few cells. So and most of the endothelium is continuous in nature. ठीक है. These type of endothelium is present in blood vessels, skeletal muscles, heart, lungs, in brain. So endothelium is continuous endothelium, because of course its continuity is important in these organs. For example, in brain, these are responsible for the blood brain barrier. Endothelium is a very endothelium plays very much important role in maintaining the blood brain barrier, which is very important body part. So in next diagram B, fenestrated, you can say, you can observe more, you can observe more division of cells. So because so transportation is more easy from these cells, more so transportation, as in endocrine glands, transportation of hormones or secretions must be done from these endothelium cells. So this type of endothelium is present in the endocrine glands, gastrointestinal mucosa, glomerulus. So next is discontinuous intracellular, discontinuous जो structural endothelium is present mostly in liver, in spleen, in bone marrow. You can say a huge distance between endothelium cells. So these cells are discontinuous. Here the permeability of endothelium is high. So these are actually basic structure, different heterogeneity of structure, which I want to teach you about change in structure of endothelium. So मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा तो हो गया है कि एंडोथीलियम के स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पर क्या क्या डिफरेंस आता है. मोस्ट इस सारी चीज़ में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको डायग्राम भी नहीं पूछी जाएगी, आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ये पूछा जा सकता है जो नीचे एग्जांपल्स दी है, लाइक इन लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, इनमें कौन सी जो है वो हो सकती है टाइप स्ट्रक्चर हेट्रोजेनिसिटी के लिहाज से अगर वो बात करता है, कौन सी एंडोथीलियम की लेयर हो सकती है. एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर एज यू नो कि एंडोक्राइन में अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कॉन्टीन्यूस एंडोथीलियम का रोल इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज सिक्रीशंस हैं, हार्मोन्स रिलीज होंगे. सो उनकी रिलीज ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसी एंडोथीलियम हो जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके. सो यहाँ पर तो आपको ये सब एग्जांपल्स और इनकी कहाँ से निकल रही हैं तो ये आपको याद रखना है. ये एमसीक्यूज़ हैं एक्चुअली, और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं. इन आवर कमिंग टेस्ट आई कैन चेक यू के आप लोगों ने इससे क्या सीखा, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है आपको बुक में ना मिले. ठीक है, लेकिन हम अल्टीमेटली यूएचएस की प्रिपरेशन करेंगे तो हमें ये चीज़ जो है वो समझनी है. As I was talking a few minutes ago about blood-brain barrier, endothelium
role of endothelium in the maintenance of blood-brain barrier is much high, because the permeability of endothelium decides कि किस चीज़ को जो है वो जाने देना है ब्लड वेसल से बाहर, किसको नहीं. In case of brain is a vital organ of our body. Brain is sterile. ब्रेन में नॉर्मल फ्लोरा भी नहीं होता. ब्रेन में कोई जो है किसी भी किस्म का बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और ये सारे जाते हैं किसी इन्फेक्शन की सूरत में. our in our body many organs like GIT have normal flora in form of bacteria, in form of fungi. Our skin have normal flora, our mouth is filled with normal flora. Many bacteria are present in our mouth, in our upper respiratory tract. But in brain is a vital organ. Brain is sterile. So, so ब्लड को भी ब्लड को भी परमिशन नहीं है कि वो ब्रेन में जा सके. इसीलिए क्या होता है कि ब्रेन में जाने के लिए वहाँ पर बैरियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. वहाँ पर हर चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ हॉर्मोन्स, इंजाइम्स, ये सारे ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं ब्रेन के साथ और ब्लड के साथ अराउंड अक्रॉस ब्लड वेसल्स. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन ट्रांसफ़र अक्रॉस ब्लड वेसल एंड ब्रेन. ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ हाईली सोफिस्टिकेटेड. बाकियों की निस्बत, बाकी बैरियर्स की निस्बत ये ज़्यादा सख्त है. यहाँ पर सख्ती ज़्यादा है. आप यही समझ लें कि जिस तरह के एक जैसे कि अभी आपने देखा लॉकडाउन था. लॉकडाउन में आप देखें कि एक वो एरिया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस थे, उसको सील कर दिया गया. एक वो एरिया था जहाँ पर कम केसेस थे, वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा नाका लगा हुआ था पुलिस वालों का. इसी तरह यहाँ पर भी क्या है कि देखें इन केस के वो जगह जहाँ पर फंक्शनिंग ज़्यादा है, वो जो कि सेंटर है पूरे बॉडी का, जहाँ पर कंट्रोल है पूरी बॉडी का, वहाँ पर जो है बैरियर्स ज़्यादा है. सो हाई सेलेक्टिव परमेबिलिटी of endothelium. So high selective endothelium is selective permeable, but in case of brain, high selective permeability of endothelium can observe, formed by capillaries endothelial cells. Okay, endothelium capillary cell, because exchange of carbon dioxide and oxygen must be occur. So endothelial cells भी वहाँ endothelial cells से बनी होती है. Tightness of barrier depends upon the close position of astrocyte. Astrocyte are present outside the endothelium, especially in brain, in the vessels of brain. So astrocytes जितने क्लोज होंगे उतना ज़्यादा बैरियर स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है. आफ्टर एंडोथीलियम astrocytes are present. So endothelium and astrocyte collectively participates in the barrier maintenance of blood brain barrier. Now another important point, in case of large arteries, sorry, in case of large blood vessels, for example in arteries, in large veins, you can observe some important things. In large vessels, or for example in arteries and veins, I'm not talking about capillaries, I'm specifically talking about arteries and veins. You can observe endo after endothelium, after endothelium, layer of elastic fibers or muscles are present, and after muscle layer, thick layer of collagen can be present. So in arteries and veins, transportation is difficult because number of layers are present behind endothelium. So crossing from these layer for fluids, for enzyme is difficult. But in case of capillaries, we can see in next slide. You can now say that the capillaries endothelium is consisted of only single layer of cell, and
only basement membrane is present behind this, and the junctions between endothelial cells are very weak. It means transport of material from this blood vessel easy as compared to arteries and veins. So you should know about के हमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ से होती है ज़्यादा और वो कहाँ से इजी है। और सो आप कहेंगे इसके अलावा वेन्स और आर्टरीज का क्या रोल है। वे इसका मतलब अगर किसी एक चीज़ का रोल मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन में बता रहा हूँ, इट डजेंट मीन के आर्टरीज और वेन्स का रोल कोई नहीं है। आर्टरीज और वेन्स का अपने बहुत सारे रोल हैं। वो बहुत सारे जो हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल आर्टरीज प्रेशर बहुत ज़्यादा बेयर कर सकती है, बिकॉज हार्ट से ब्लड ला रही है, तो जब हार्ट की पंपिंग ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो आर्टरीज को बेयर करना है। सो इस तरह कैपिलरीज आर एट द एंड प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लार्ज वेसल्स, so they are involved in they can penetrate more in tissues as compared to arteries, and the transport of material is easy from capillaries. So every organ has their own स्पेशलिटी इम्पोर्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि कैपिलरीज वेन्स और आर्टरीज तीनों इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनमें एंडोथीलियम का डिफरेंस कुछ ये है। लेट्स टॉक अबाउट फिनोटाइप ऑफ एंडोथीलियम। यूजली दे आर एंडोथीलियल सेल्स, दे आर फ्लैटेंड सेल्स, देखने में ज़्यादातर फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, हैविंग अ थिकनेस ऑफ अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर एंड 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 10। दिस इज़ अ एवरेज थिकनेस। मैंने आपको पहले जो थिकनेस बताई वो उस जगह से थी जहाँ न्यूक्लियस होता है, बट एवरेज थिकनेस जो देखी गई है वो 0.5 माइक्रोमीटर तक एंड आर 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग। सो 100 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं, दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़, एंड 10 माइक्रोमीटर वाइड, और जो 10 माइक्रोमीटर तक वाइड भी हो सकते हैं। नाउ इन ड्यूरिंग inactivated condition, number of receptors are present, like CD31 and CD34 present on the surface of endothelial cell. We have studied earlier के von Willebrand factor is also present in the endothelial cell, so you can say कि von Willebrand factor भी होता है, but in activated condition or in angiogenic condition, in when new blood vessel formation is going to happen, और जब कभी भी इंजरी हुई है, कभी भी ये ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, तो इन केस ऑफ ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स is damaged, then endothelial cells becomes active and participate in the maintenance and in the formation of and in the repairing of old blood, formation of new blood vessels, repairing of old blood vessels. So whenever these angiogenic conditions happens, then endothelial cells becomes active. So then we can say that these endothelial cells are activated endothelial cells. So number of receptors are present of on the surface of uh, on the surface of endothelial cells, for example, platelet derived growth factor receptors, vascular endothelial growth factor receptors, and number of integrins are also present on the activated angiogenic cells. So actually these are the phenotypic nature phenotype of endothelial cells के अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, इस स्लाइड को बताने का पर्पज़ क्या है। इस स्लाइड को बताने का पर्पज़ ये है कि आगे चल के हम डील करेंगे थ्रोम्बस को, थ्रोम्बोसिस को डील करेंगे, तो उस टाइम पर आपको ये ना हो रहा कि यहाँ पर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स कहाँ से आ गए, यहाँ पर वैक्सुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स कहाँ से आ गए, यहाँ पर इंटेग्रेंस CD31 CD34 कहाँ थे, हमने ऑलरेडी डिस्कस नहीं किए। सो एंडोथेलियल सेल्स कंटेन्स नंबर ऑफ थिंग्स विच आर important for thrombosis, which are important for many important functions. So now important function of endothelium cells, endothelial cells, and what are the important function of endothelium. So endothelium is a selectively permeable membrane. It selects the materials to transport across the blood vessels like
number of nutrients, number of gases, for example, carbon dioxide, oxygen transport in normal circumstances from blood to the tissues, and tissue from, and carbon dioxide from tissue to the blood, and the maintenance of extracellular matrix. There are a number of connected proteins like collagens that are number of connected materials that are present in the extracellular matrix. So endothelium is also participate indirectly in the maintenance of extracellular matrix. Third point, in the third important function of endothelium is ट्रांसपोर्ट फंक्शन. हमने देखा कैपिलरीज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा रोल है. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल, ऑफ गैसेस, ऑफ enzymes, chemicals, hormones from blood is occurs through endothelium. Endothelium permits the मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यू. ये नहीं है कि हर चीज़ ब्लड से उठ के टिश्यू में चली जाएगी. In case of blood brain barrier, when I was telling you about blood brain barrier, you should know कि बहुत सा in our body, in our blood, any bacteria, any virus can move in our blood, but and every pathogen cannot cross the barrier, blood brain barrier. Only few bacteria, those are capsulated in nature, especially capsulated bacteria, can cross blood brain barrier and can cause disease in brain. तो जब तक ब्रेन तक कोई पैथोजन या कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया नहीं पहुंचता तब तक वहाँ डिजीज नहीं होती है. लेकिन अगर हर बैक्टीरिया और पैथोजन ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस नहीं कर सकता, बट सम बैक्टीरियाज विच आर कैप्सुलेटेड, फॉर एग्जांपल K1 strain of E. coli, which have micro capsule, can cause meningitis in brain. In case of Neisseria meningitis, Neisseria can cross blood brain barrier. Few fungus can, like Cryptococcus, can cross blood brain barrier because they are more virulent. They can cross endothelium, they can cross blood brain barrier. But अगर आप कहें कि जो है वाई Salmonella typhi, why typhoid causing organism is not crossing the blood brain barrier, because उसके पास एबिलिटी नहीं है. वो कैसे जाएगा? उसका वो ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा. सो जो पैथोजिन है वो सारा ब्लड ब्रेन बैरियर में रहेगा. सो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड फंक्शन में भी यही है कि बहुत सारे जो इंजाइम्स हैं, बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं, वो हमारे ब्रेन और ब्लड के साथ एक्सचेंज होते हैं. न्यूट्रिएंट भी एक्सचेंज होते हैं, लेकिन हर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज नहीं हो सकता, बिकॉज बैरियर वहाँ पर क्या है, रुकावट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर पोर्शन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर आवर लेक्चर, फॉर आवर कमिंग लेक्चर इज pro and anti-thrombotic actions of endothelium. So pro-thrombotic actions of endothelium and anti-thrombotic action, it means endothelium is involved in the formation of clot, in formation of thrombus, in formation of uh, uh, information of barrier in the blood vessel, information of thrombus in the blood vessel. And endothelium is also responsible for the removal of and the prevention of thrombus formation in our blood vessels. देखिए, ये डिपेंड करता है कि एंडोथीलियल सेल जो है वो एक्टिवेटेड है या नहीं, या कंडीशन क्या है. इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंडोथीलियल सेल विल बी unactivated. Then thrombus formation will occur only if कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो, अगर कोई जो है कोई और पैथोलॉजी है. बट इन केस ऑफ इंजरी,
Endothelial cells act as prothrombotic action, performs prothrombotic action. So depends on के किस टाइम पर क्या फंक्शन चाहिए. So endothelial cells performs both function pro and antithrombotic functions. It means they can clot the blood or they can prevent from clotting of blood. ठीक है, सिंपल वर्डिंग में क्या होता है, ब्लड को क्लॉट भी कर सकते हैं और ब्लड को क्लॉटिंग से बचा भी सकते हैं एंडोथीलियल सेल. और ये दोनों काम करते हैं. इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं. इन इंजरी और इन एक्टिवेटेड सर्कमस्टांसिस और इन एमरजेंसी सर्कमस्टांसिस जहाँ पर ब्लीडिंग को रोकना होता है, ब्लड लॉस को रोकना होता है, वहाँ एंडोथीलियल सेल्स परफॉर्म करते हैं clot forming action. Okay, so these are also involved in the regulation of immune responses. For examples, in case of infection, अगर किसी टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया, so WBCs moves or cross the blood vessels. For example, neutrophils undergo diabetesis, through diabetesis moves toward the site of infection and try to dissolve the and try to clear the tissue and try to kill the infection. And number of interleukins also released from the endothelial cells, and interleukin 1, interleukin 6, and some molecules are also present on the surface of endothelial cells, जिनको हम कहते हैं mean histocompatibility complex, like MHC molecules. MHC molecules are participate in the presentation of antigens टूवर्ड द डब्ल्यू बेसिस. ठीक है, तो क्या करते हैं कि बाहर से आने वाले इन्फेक्शियस एजेंट पैथोजिन को क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो पकड़ते हैं और एमएचसी के थ्रू. अभी इस बात के आपको जो समझ आना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि सर ये आप एमएचसी का क्या जिक्र कर रहे हैं. इन सेकेंड ईयर व्हेन यू विल गो फॉर इम्यूनोलॉजी देन यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियर कि क्या होता है. लेकिन अब इतना याद रखें कि एंडोथीलियम जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व है, हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स भी कॉज करती है. हेल्दी एंडोथीलियम अच्छा रिस्पॉन्स रखेगी. इसी के साथ एंडोथीलियम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एंजियोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. सो इंजर्ड साइड पर क्या है, इंजर्ड साइड पर नई ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन और ओल्ड ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग जो है वो सारी की सारी जो वहाँ पर एग्जिस्टिंग एंडोथीलियल सेल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. सो they are involved in the formation of new blood vessels and regulation of cell growth. They also regulate the growth of multiple cells. Now we are going toward our next lecture, which is thrombosis. So before thrombosis, you should know about what is thrombosis. Thrombosis जो है वो जब हम उस लेक्चर में पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा. लेकिन उससे पहले ये है कि मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ कि क्लॉट फॉर्मेशन कब जो ब्लड को है वो क्लॉट होना चाहिए है और कब नहीं. इस चीज़ की मेंटेनेंस बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़रूरी है. सो देर इज़ अ कंट्रोल्ड मैकेनिज्म बिटवीन क्लॉट फॉर्मेशन एंड क्लॉट फॉर्मेशन इनहिबिशन. सो how endothelial cell performs their function in case of in case of normal circumstances, in case of injured circumstances, in case of normal circumstances. Now I am going to discuss in case of normal circumstances. In a case of normal circumstances, endothelial cells participate to inhibit clot formation. Like देखें, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो जो है उसका नॉर्मल होना ज़रूरी है. अगर कहीं क्लॉट फॉर्मेशन हुई, इट कैन कॉज सीवियर डैमेज टू योर नेक्स्ट ऑर्गन, टू योर अल्टीमेटली टूवर्ड द बॉडी. हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो किस जगह पर है. सो क्लॉट फॉर्मेशन इन नॉर्मल ब्लड, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल्स में नहीं होनी चाहिए है. सो क्लॉट फॉर्मेशन कब होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्लॉट फॉर्मेशन तो जो है होनी ही नहीं चाहिए. बट इन केस ऑफ इंजरी, you
must need a clot to protect your blood to pouring out into environment. देखें जब कभी भी एक्सीडेंट होता है क्या देखा है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स में जो डेथ होती हैं वो इस वजह से होती हैं, सडनली बहुत ज़्यादा जो है बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है। तो बॉडी जो है वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम जो ऑफ कोर्स बॉडी में 5 to 7 लीटर्स तो है, लेकिन जब अल्टीमेटली सडनली बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो ऐसे में क्या होता है, बॉडी के अंदर जो है इस्केमी कंडीशन हो जाती हैं, तो अल्टीमेटली जो है नेक्रोसिस हो सकती है, टिश्यूज़ जो हैं वो तो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है बॉडी की विद इन फ्यू मिनट्स। तो बॉडी शॉक में जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि वहाँ पर अब देखें इस सडन लॉस को, या सॉरी, ब्लड लॉस को बचाने के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज़्म है जिसको है थ्रोम्बोस फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन। तो वहाँ पर भी एंडोथीलियम जो है रोल प्ले करती है। But now I'm telling about antithrombotic actions. Endothelial cell perform antithrombotic action through three ways, like platelet inhibitory effect, like with by the anticoagulant effect, and by fibrinolytic effects. It means endothelium inhibits platelet for activation, for binding with एंडोथीलियम के देखें जो प्लेटलेट, जो एंडोथीलियम है, जो प्लेटलेट्स हैं वो एंडोथीलियल से सेल्स के साथ बाइंड ही ना करें। जब जुड़ेंगे नहीं तो प्लेटलेट्स आर मोस्टली इन द फॉर्मेशन ऑफ इन्वॉल्व इन द क्लोट फॉर्मेशन। जब प्लेटलेट्स बाइंड नहीं करेंगे तो ब्लड जो है वो मूव करता जाएगा, ठीक है। एंटी कोगुलेंट इफेक्ट्स, नंबर ऑफ एंटी कोगुलेंट, नंबर ऑफ जो बहुत सारे जो हैं हमारी बॉडी में कोगुलेशन फैक्टर्स मौजूद हैं, अराउंड 13-14 कोगुलेशन फैक्टर हमारी बॉडी में मौजूद हैं। सो एंटी कोगुलेंट इफेक्ट्स, उनके इफेक्ट्स को भी रोकना होता है। सो एंडोथीलियम कैन इनहिबिट द इफेक्ट्स ऑफ जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं उनके इफेक्ट को भी रोक सकती हैं। देन इट कैन लाइज द fibrin protein. Our body has three major proteins. Many in our body, number of many proteins are present, but basically albumin, globulin, and fibrinogen. Fibrinogen is also involved in the clotting of blood. सो अगर फिब्रिनोलाइसिस, अगर उस प्रोटीन की लाइसिस कर दी जाए तब भी क्लोट फॉर्मेशन को रोका जा सकता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। सो मैं इन सब चीज़ों को आगे आगे डिस्कस करता हूँ कि किस तरह वो रोकते हैं। In case of platelet inhibitory effects, in case of platelet inhibitory effects, few cytokines or chemicals released like prostacyclin, nitric or nitric oxide, adenosine diphosphatase. Adenosine diphosphatase जो है वो ADP को डीनेचर कर देता है। सो इस तरह से they are involved in the inhibition of platelets, inhibition of प्लेटलेट एक्टिवेशन। सो अभी हमने जो सेकंड चैप्टर होगा इन्फ्लेमेशन का, उसके अंदर आप इनके रोल जो हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, इनके रोल जो हैं वो बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक आप याद रखें कि इनका यहाँ पर क्या रोल है। एंटीकोगुलेंट इफेक्ट्स आर ड्यू टू थ्रोम्बोड्यूलिन and protein C receptors and protein C receptor, heparin like molecules, due to heparin like molecules, and anticoagulant effect is due to tissue factor pathway inhibitor. uh, how thrombodulin and protein C receptors perform antithrombotic activity. Thrombodulin, you should know कि जो thrombin है, thrombin is a very important protein for the clotting of blood. So activation of thrombin can cause blood clotting, and the inactivation of thrombin या denaturation of thrombin protein can cause inhibition of clotting, can cause anticoagulant effect. So thrombodulin binds with the thrombin. Thrombodulin is a protein present on our endothelial cells, released from endothelium, which binds with the thrombin, and protein C and protein C binds with the protein C receptors on endothelial cells. देखें, what is protein C? Protein C is a protease enzyme. Protein C is
It's a protease enzyme. It means protein C cleaves many of proteins, they can lyse. It means कि प्रोटीन सी जो है बहुत सारी जो प्रोटीन्स हैं उनकी जो उस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है जो कि प्रोटीन की लाइसिस करवाता है। तो प्रोटीएज, प्रोटीन सी इज़ अ प्रोटीएज, इज़ अ पार्ट ऑफ, इज़ अ member of protease family, enzyme family, which requires protein S as a cofactor. So it means protein C requires protein S to perform its maximum function. Protein S act as a cofactor for protein C. So protein C with protein S, and one more important thing, it protein C is also vitamin K dependent. So protein C with protein S, and by using vitamin K it binds with the protein C receptor. Thrombodulin thrombin binds with thrombin and inactivate thrombin, and protein C receptors binds with protein C and they form a complex. जो complex बनता है वो complex क्या करता है, वो एंटी कोगुलेंट इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो एंटी कोगुलेंट इफेक्ट कॉज करता है, ये बात याद रखिएगा। सो विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के फ्रॉम आवर बॉडी, protein C cannot, protein C may not perform normal function, protein S cannot perform normal function. So it is very important MCQs। लास्ट ईयर एक MCQs आया कि क्लोटिंग के अंदर ब्लड क्लॉट, फॉर ब्लड क्लॉटिंग में, या जो ये सारी की सारी एक कोगुलेशन कैस्केड हम स्टडी करेंगे उसके अंदर किस विटामिन का बहुत ज़्यादा रोल है। विटामिन सी, विटामिन के, और इसके अलावा दो तीन विटामिन्स की ऑप्शन थी। तो विटामिन के का जो है वो कोगुलेशन से बहुत ज़्यादा रोल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने विटामिन सी का भी डिस्कस किया, लेकिन पहली बात ये कि विटामिन सी इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर आवर इम्यून सिस्टम। सो लेकिन, और दूसरी बात ये है कि आपकी बुक के अंदर, और इसके अलावा विटामिन सी के मेजर फंक्शंस अगर आप स्टडी करें तो वहाँ पर आपको ऐसी कोई बात नहीं मिलती। तो विटामिन के जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोगुलेशन वाली साइड पर। तो इसलिए विटामिन के, और अगर कोई आप कहें कि जो जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो कौन सी इलेक्ट्रोलाइट या कौन से आयन जो हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, सो उसमें भी लोग बहुत उसमें कैल्शियम है कोगुलेशन कैस्केड के अंदर। अगर आप देखें तो कैल्शियम का बहुत रोल है कोगुलेशन करवाने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो एमसीक्यूज़ हैं जो कि यूएचएस में आ चुके हैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आ चुके हैं, कि विटामिन के का रोल, कैल्शियम का रोल कोगुलेशन कैस्केड के अंदर, विटामिन के का कोई रोल है कि नहीं, या विटामिन सी का कोई विटामिन सी का रोल है या विटामिन के का रोल है, या कौन सी प्रोटीन जो है वो कोगुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके एमसीक्यूज़ जो हैं उनमें यही छोटी छोटी बातें होती हैं और ज़्यादा लंबे चौड़ी बात नहीं होती। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना है कि ठीक है, प्रोटीन सी क्या है, प्रोटीन एस क्या है, how protein C and protein S perform anticoagulant effect। सो ये सारी बातें जो है ना आपको याद रखनी है। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट के हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल्स जो है बाइंड करते हैं एंडोथीलियम की सरफेस के साथ। हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल बाइंड्स विद द सरफेस ऑफ एंडोथीलियम और एंडोथीलियल सेल एंड कॉज एक्टिवेशन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3 प्रोटीन। ये बात याद रखिएगा, कॉज एंटी थ्रोम्बिन 3 प्रोटीन। दिस एंटी थ्रोम्बिन 3 प्रोटीन इनहिबिट्स द many coagulation factors like 9A, 10A, 11A, 12A। आपकी बुक के अंदर आपके लिए इतने ही जो स्टडी है ये आपको याद करनी है कि हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल्स किस तरह एक्ट करते हैं। अब मार्केट्स के अंदर जो ड्रग्स अवेलेबल हैं जिनको हम जो कि हेपरिन की तरह एक्ट करती हैं, हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करती हैं, वो भी इसी जो है जो वे है उसको यूज़ करती हैं। वो भी इनहिबिट करती हैं क्लॉट फॉर्मेशन को बाय यूजिंग इनहिबिशन ऑफ 9, 10, 11 एंड 12A।
Now another important point is how tissue factor pathway inhibitor act, as we can learn in previous slides के देखें कोफैक्टर S binds with protein C. So protein S is also bind, या cofactor S is also binds with tissue uh, factor binds with tissue factor. These tissue factors pathways in bind and inhibit tissue factors up and 7A complex. देखें आसान वर्डिंग में ये बात बता दूं, हमारी जो कोगुलेशन कैस्केड होगा वो पाथवे, वो साइकिल जो अल्टीमेटली कोगुलेशन करवाएगा हमारी बॉडी में, उसके अंदर टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7A कम्प्लेक्स का बहुत रोल है कोगुलेशन करवाने में. अगर इनकी ही इनहिबिशन करवा दी जाए, इनकी इनहिबिशन करवाते हैं थ्रू टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, ठीक है, जिनको प्रोटीन सी चाहिए, सॉरी प्रोटीन एस चाहिए, कोफैक्टर एस चाहिए, ठीक है. अगर इन कम्प्लेक्स की इनहिबिशन करवा दी जाए तो कोगुलेशन कैस्केड जो है वो कंटिन्यू ही नहीं हो सकता, तो कोगुलेशन नहीं होती. तो अब तक आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि क्लॉट फॉर्मेशन किस तरह से रोकी जा सकती है, या एंडोथीलियम, हाउ एंडोथीलियम पार्टिसिपेट इन द इनहिबिशन ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन इन नॉर्मल सिचुएशंस, इन नॉर्मल सर्कमस्टांस. Another important point, how anticoagulant antithrombotic effect can be observed. देखें इन एंटी थ्रोम्बोटिक इफ़ेक्ट जो है उसमें आपने देखा थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोका जाता है, लेकिन उसमें हमने फैक्टर स्टडी कर लिए. लेकिन अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट के एज यू विल सी इन फ्यू कमिंग लेक्चर के क्लॉट फॉर्मेशन भी लास्ट पर एक जो है क्लॉट स्टेबलाइजेशन होती है, क्लॉट स्टेबल होता है. क्लॉट स्टेबलाइज होने के लिए वहाँ पर फिब्रिन जो प्रोटीन है उसका मैश वर्क बनता है, वो डिपॉजिट्स होती हैं बिटवीन दी प्लेटलेट्स. फिब्रिन, एक्टिवेटेड फिब्रिन जो है उसको प्रोटीन विच यू कैन यू शुड नो अबाउट द फिब्रिनोजिन, जो कि एक इनएक्टिवेटेड प्रोटीन होते हैं जो एक्टिव फॉर्म में जो है बाइंड करती है किसमें, सॉरी मैशवर्क बनाती है क्लॉट फॉर्मेशन में. हाउ फिब्रिन कैन एक्ट इन क्लॉट फॉर्मेशन, तो ये हम कोगुलेशन कैस्केड में देखेंगे कि फिब्रिन जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन में किस तरह इन्वॉल्व है. बट नाउ कि ये बात है कि अगर फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और अगर हम फिब्रिन प्रोटीन की ही लाइसिस करवा देंगे, सो वी कैन इनहिबिट द क्लॉट फॉर्मेशन, we can observe antithrombotic effect of endothelium. There is a protein, there is another important factor or protein, a plasminogen activator released from endothelial cells which activates the plasminogen, into plasmin. Plasmin is the activated form of plasminogen. Plasmin is responsible for the degradation of fibrinogen, of fibrin, of activated fibrin. In case of clot formation, in case of clot formation, plasminogen activation can be inhibited. Plasminogen activator inhibitors can act on plasminogen, and plasminogen, there are chances कि plasminogen activate ही ना और plasmin ना बने. But in case of antithrombotic or fibrinolytic activities, plasminogen activators efficiently acts on plasminogen to activate it into plasmin. When when plasminogen become active in the form of plasmin, then plasmin degrades fibrinogen into fibrin. Then plasmin degrades fibrin into fibrin degradation products. When structure of fibrin becomes
डिस्टॉर्ट, और जब कभी भी फिब्रिन जो है प्लाज्मिन की एक्शन की वजह से टूट जाता है, देन फिब्रिन जो है वो क्लॉट के अंदर, क्लॉट जो फाइनल क्लॉट की स्टेबलाइजेशन होनी है उसमें जो है फिब्रिन प्रॉपरली पर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो इस तरह फिब्रिनोलाइसिस जो है, फिब्रोलिटिक इफेक्ट्स ऑफ एंडोथीलियम इज़ ड्यू टू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर जो है वो देखा गया है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंडोथीलियम एंटी, एंड वी हैव डिस्कस्ड एंटी thrombotic effects of endothelium. So in other lecture, now in coming lecture we will discuss important function of platelets and prothrombotic function of endothelium. आप इस लेक्चर का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन यह है कि सबसे पहले इसको आप बुक से पढ़ने की कोशिश करें। जब तक मेरा लेक्चर यूज़लेस है जब तक आप इसको बुक से नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज बुक्स में जो चीज़ लिखी है आपको वो यूएचएस में एमसीक्यूज़ के तौर पर आनी है। और जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ कि यूएचएस के बहुत सारे पेपर्स देख चुका हूँ, बहुत सारे उन लोगों से मिल चुका हूँ जो कि यूएचएस के पेपर सेटर हैं, तो उनको इन चैप्टर्स में, इन टॉपिक्स में बहुत सारे एमसीक्यूज़ पसंद हैं। मैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिहाज से बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इसमें से एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, आते हैं। जो हीमोडायनामिक डिसऑर्डर है इसमें टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, उनमें एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ इसमें से आते हैं। ठीक है। सो आप लोगों को इन छोटी छोटी बातों को याद करना है कि कौन सी प्रोटीन किस पर एक्ट करके किसको एक्टिवेट या डी अनएक्टिवेट कर रही है या डीएक्टिवेट कर रही है, जिससे इनहिबिट कर रही है, जिससे हमारे क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो हो रही है, डैमेज हो रही है, या क्लॉट फॉर्मेशन अकर कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बुक के अंदर, आप बुक में यही टॉपिक इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, एंडोथीलियम, रोल ऑफ एंडोथीलियम, आप उसमें पढ़ें, एंडोथीलियम पढ़ें, उसका रोल पढ़ें, आप उसको पढ़ के और इस लेक्चर को सुने, और इस लेक्चर में वो चीज़ें जो आपको चंद एक्स्ट्रा मिली आप उसको नोट डाउन करें। ठीक है, उसके बाद देन आप क्वेश्चन करें कि सर हमें बुक में जो ये चीज़ है ये हमें क्लियर कट जो है समझ नहीं आई। सो वी कैन अरेंज सम इंटरेक्टिव सेशन ऑन जूम फॉर यू, के वहाँ पर क्वेश्चन आंसर करें और वहाँ पर आपका वाई एग्ज़ाम या एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं। सो अपनी अटेंडेंस को 100% इंश्योर कीजिएगा। मैं कॉन्टीन्यूसली देख रहा हूँ आपकी अटेंडेंस को आपसे। सो ये लेक्चर वो थे जो ट्राई किए कि आपको थोड़े से इजी वर्डिंग में समझाए जाएं। देखें, बुक में बहुत सारी वर्डिंग जो है, बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, लेकिन इनके बावजूद अगर आपको इस वे के अकॉर्डिंग आप ये वेस के बारे में भी बताइएगा कि ये कैसा आपको तरीका लगता है, लेकिन आप कोई और एडिशनल चीज़ करवाना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है। सो वही बात करूँगा, रोल ऑफ एंडोथेलियम एंड रोल ऑफ प्लेटलेट इज़ मच इम्पोर्टेंट फॉर नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको एंडोथेलियम का पता हो, कि उसके रोल का पता हो, उसके बाद प्लेटलेट्स का पता हो। ज़ाहिर सी बात है आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक पढ़ेंगे तब तक मैं इंतज़ार तो नहीं कर सकता कि मैं टॉपिक को कब शुरू करूँ। बेहतर ये था कि खुद से कुछ चीज़ें ऐसी बता देता जिससे मैं अपना टॉपिक तो ज़रूर कवर करवा सकता, पैथोलॉजी का। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये इंशाल्लाह वी विल डिस्कस योर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर, इन स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर, सो ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ सके सारी चीज़ों की। ठीक है।